Hello students, Standard 8, Subject Social Science, Chapter number 2, What is around us? Dhanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question came to his mind. Dhanvin asked his mother, What is land made up of? Mother replied, Do you see the sun every day? The sun too has a family which is known as the solar family. Our earth is one of the members of the solar family. The most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water, and air to sustain living beings. Means Earth is the only planet in the solar system which has got temperature, water, and air which supports the life. Generally, it is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. ऐसा माना जाता है कि सन का एक पार्ट जो उससे अलग हो गया था टकराने के बाद, कोलाइजन का मतलब टकराने के बाद, दैट पार्ट इज अर्थ. एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन, शुरुआत में अर्थ इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ फायरबॉल, एक आग का गोला था. These fireballs started to cool down slowly. Many elements of the earth got transformed, changed into liquid and further into solid form. During this process, the elements which got changed into solid came to be known as the lithosphere. The elements which got transformed into liquid, they came to be known as hydrosphere. The elements which got transformed into gases came to be known as the atmosphere. Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. और जहाँ लिविंग वर्ल्ड डेवलप हुआ लैंड, वाटर और एयर की वजह से, उस स्फीयर को नाम दिया गया बायोस्फीयर. In this way, the four spheres came into the existence on Earth. The picture shows the different spheres of the Earth. First one is lithosphere. The sphere on which we live is known as the lithosphere. Litho means rock and sphere means layer. The upper layer of the earth is made up of soil and solid materials like rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. This layer is almost 64 km to 100 km thick. The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. यानी अर्थ के ऊपर हर जगह लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है यानी मोटाई वो अलग है. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical feature. और similarly, अर्थ का इंटीरियर यानी अंदरूनी पार्ट एंड एक्सटीरियर यानी बाहरी जो पार्ट है, they are totally different from each other. It is mostly made up of substances like soil and rocks. लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, अलग अलग टाइप के लैंड के फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर. द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ द अर्थ को मूव करते हैं वैसे वैसे द टेम्परेचर इंक्रीजेज, बढ़ता है. द मॉल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा. और जो मॉल्टन रॉक है यानी पिघले हुए जो रॉक का जो लिक्विड है which is in the interior of the earth at the center, that liquid is known as the magma. There are many gases present in the interior of the earth. Interior of the earth में बहुत सारे gases are there which rises up, जो ऊपर आते हैं with pressure and heat. But the pressure of rocks of the surface of the earth is equally strong. लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर एक रॉक का लेयर है विच इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. दस बैलेंस बिटवीन द टू इज़ मेंटेन. इसकी वजह से बैलेंस बना रहता है. सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक. और इसकी वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है वो ब्रेक यानी टूटता नहीं. व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज़ नॉट मेंटेन, द क्रस्ट ब्रेक्स एंड अ वॉल्केनो इरप्ट्स. और ये बैलेंस जब बिगड़ जाता है, जब मेंटेन नहीं होता, तो जो क्रस्ट होता है इट ब्रेक्स एंड वॉल्केनो इरप्ट्स.
Mummy, how is the lithosphere useful to us? Where can we construct our home if the lithosphere is not there? हम हमारा घर कहाँ बनाएंगे अगर lithosphere ना हो तो? Without lithosphere, how can we get water to drink? Agriculture for food is not possible. Minerals for industries we will not get, and forest will not get land to grow. Draw a picture showing all the details you observe on lithosphere based on our conversation. Second one is hydrosphere. Now let me talk to you about hydrosphere. The hydrosphere is a liquid component of the earth. यानी अर्थ के ऊपर जो लिक्विड मिलता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर. इट इंक्लूड्स, उसके अंदर आते हैं ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज़ मोर. सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा वाटर इज़ देयर दैन दैट ऑफ द लैंड, यानी लैंड कम पाया जाता है. हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. These oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, and the Arctic Ocean. All these oceans are connected with each other. The water bodies close to land are known as seas, bays, straits, gulfs, etc. The ocean on the earth are huge and deep. Valleys with depth of 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम. यानी ओशन और सीज के अंदर भी वैली पाई जाती है जिसकी डेप्थ यानी गहराई 10 टू 11 किलोमीटर्स की होती है. द ओशन बेड हैज़ सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, इन द सेम वे एट द बॉटम ऑफ द ocean and sea, same physical features can be found. It has high mountains, plateaus, vast plains, valleys, etc. Mummy, how much water will there be in the seas? Since sea water is salty, it is useful to us. Yes, sea water is useful to us. Ocean contains 97% of the total amount of water on the earth. यानी अर्थ के ऊपर का 97% of water is found in the ocean. Approximately 1/3 of the remaining water is trapped. उसके अलावा 1/3 जो पार्ट जो वाटर का है वो ट्रैप्ड है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, फ्रोजन रिवर्स एट द साउथ पोल, नॉर्थ पोल, हिमालयाज एंड द अदर माउंटेन्स. सम वाटर इज accumulated, जमा हो जाता है in the lakes, and some flows in the rivers, and some is stored in the interior of earth as groundwater. यानी some water is absorbed by the ground and which is stored in the interior of the earth, which is known as the groundwater. The amount of potable means the water which is fit for drinking is very less. Fresh water is precious, कीमती. These fresh water is required by living beings for their existence. यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए fresh water is required. The moisture for rain, which is the main source of fresh water, it comes from the ocean. Valuable chemicals, minerals, salt, fishes, etc. are found in the seas. As we have living organisms on the land, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लैंड के ऊपर, इन द सेम वे इन द ओशंस एंड सीज ऑल्सो वी हैव एक्वेटिक लाइफ. द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट ऑफ ओशंस आर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. यानी वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स विच इज generated in ocean are used for generating electricity. Besides this, oceans are also useful as waterways. Outline map of the world. In this map, we can outline the 4 major oceans of the earth. Now let's understand the third sphere, that is atmosphere.
The sphere of air that wraps the earth from all the sides is called atmosphere. It extends approximately up to 1600 किलोमीटर from the surface of the earth. यानी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है. That layer is known as atmosphere. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. Atmosphere is made up of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, and even some microorganisms. Atmosphere is colorless, odorless, without any smell, and transparent. Solid, liquid, and gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% of nitrogen, 21% of oxygen, and 1% of other gases. When we go higher from the surface of the earth, जैसे जैसे हम surface of the earth से higher यानी ऊपर जाते हैं, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. यानी most of the gases जो atmosphere के अंदर होते हैं वो decrease यानी कम हो जाते हैं. Carbon dioxide gas is heavy, so it is found more in the lower layers of the air. Ozone gas comprises is made up of very small proportion in the air. This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. Ozone gas is also found in the air. Ozone gas absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun and protects the earth from the excessive heat of the sun. This gas is more in proportion in the morning in the open ground. सबसे ज़्यादा ये गैस मॉर्निंग में पाया जाता है इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी. Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creature on the earth alive. जिंदा रखते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लिविंग क्रीचर ऑफ द अर्थ. नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन कम करता है क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन का. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर. ड्यू टू हीट द वाटर in the form of vapor evaporates and mixes with air, which is known as moisture. The process of cooling of vapor is called condensation. Various forms of moisture like dew, fog, cloud and rain are due to condensation. The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities, etc. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज आता है वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ के अंदर भी चेंज आता है. फिर चाहे वो क्लोथिंग हो, हैबिटेट हो, कलर हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एसेट्रा. मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर. Spreading of sun rays are visible due to these particles. Sun rays are spread due to dust particles present in the air. It is due to dust particle that it does not suddenly turn dark after the sunset. Dust particle की वजह से ही sunset के बाद suddenly dark नहीं होता and it does not suddenly turn bright after the sunrise. और sunrise के बाद suddenly bright नहीं होता. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. The dust particle bounce back the sun rays or sunlight on the surface of the earth and we receive light of the sun. We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. That is why radio and Doordarshan telecast is possible. Human life and relation of human beings with the different spheres of the earth. Fourth one is biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. Biosphere is one of the important spheres on earth. अर्थ के ऊपर का ये एक important sphere है. Earth is the only planet in the solar system having biosphere. Biosphere includes vegetation, animal, insects and human beings.
We obtain food and many other necessary things from biosphere. We cannot live without vegetation and animals because most part of our food we get from vegetation and animals. Biosphere is the base of our existence. It is divided into two parts: non-living and living. Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere form the non-living part, while plants, animals, and microorganisms are included in the living world. If man harms the earth by his activities, then do you think it will affect these spheres? Component of biosphere: natural, man-made, living, non-living, as it is mentioned in the picture. 2.6 figure shows effect of human activities on the sphere. Human beings knowingly and unknowingly undertakes many activities for their development. यानी ह्यूमन बींग्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं खुद को डेवलप करने के लिए. ह्यूमन एक्शन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर्स. ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी वजह से डिफरेंट स्फीयर्स के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है. ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर इज इन डेंजर. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, too much drilling for mineral oil from the interior of the earth, and excessive drilling of tube wells for water affects the lithosphere and causes an imbalance in nature. The dumping of waste from villages and cities along with the industrial waste into the water bodies pollutes them. जो कचरा डंप यानी डाला जाता है विलेजेस और सिटीज़ का, उसके साथ इंडस्ट्रीज़ का भी जो कचरा वेस्ट होता है is dumped यानी डाला जाता है in the water bodies, for example ocean, rivers, etc. Due to that it pollutes them. The polar caps have started melting due to increasing heat. The oil spills from ship and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere. The oil spill की वजह से plus disposal of इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट यानी इंडस्ट्रीज़ का केमिकल वेस्ट जो पानी के अंदर डालते हैं उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ यानी जो मरीन लाइफ होती है वो हाईली डिस्ट्रक्ट यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ डेंजर टू हाइड्रोस्फीयर. हार्मफुल गैसेस एमिटेड यानी रिलीज होते हैं बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल दैट ऑल्सो पॉल्यूट्स एयर. द एरिया विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल यानी जिस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं वहाँ कार्बन मोनोक्साइड का प्रोपोर्शन ज़्यादा पाया जाता है इन द एयर. द अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज़. यानी हम अगर ट्रीज़ ज़्यादा कट करेंगे तो CO2 का जो प्रोपोर्शन है वो एयर के अंदर इंक्रीज यानी बढ़ जाता है. हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2. और अर्थ के ऊपर हीट बढ़ जाती है जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है. इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर. इसी तरह ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है वो बायोस्फीयर को अफेक्ट करती है. द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर्ड. द हेल्पिंग लिंक ऑफ नेचर are endangered due to the exploitation of environment, means by taking the advantage of environment which endangers the biosphere, जिसकी वजह से आज biosphere खतरे में है. Project find out the sources of pollution in your surrounding and study its effect as well as suggest solution to remove it. Thank you.